नमस्ते नन्हे अन्वेषकों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार ग्लोबल स्काउटिंग मिशन पर निकलने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर इंसान अपने घर बनाने के लिए दुनिया की कुछ खास जगहों को ही क्यों चुनते हैं और इसके पीछे क्या राज है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो इसे समझने के लिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। सोचिए, एक छोटी सी क्लासरूम है जिसमें 30 बच्चे बिल्कुल ठसाठस भरे हुए हैं। अब उसी की तुलना स्कूल के एक बहुत बड़े खाली असेंबली हॉल से कीजिए, जहां वही 30 बच्चे आराम से फैले हुए हैं। है ना बिल्कुल अलग नज़ारा। ये उदाहरण हमें बहुत ही आसानी से समझा देता है कि कैसे उतने ही लोगों की संख्या हमें बिल्कुल अलग महसूस हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जगह कितनी बड़ी या छोटी है। छोटी सी क्लास में बहुत भीड़ लग रही थी, लेकिन बड़े हॉल में बिल्कुल नहीं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारी पूरी दुनिया में आखिर कितने लोग रहते हैं। तो सुनिए, इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नंबर। 66 करोड़ नहीं, बल्कि 660 करोड़। जी हाँ, 6.6 बिलियन लोग। है ना ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा? लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है, फिर भी इंसान केवल कुछ चुनिंदा जगहों पर ही इकट्ठे होते हैं। दुनिया की बहुत सारी जगहें तो एकदम खाली पड़ी हैं और कुछ जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार शब्द आता है, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। ये मापने का एक तरीका है कि किसी एक खास इलाके में कितनी भीड़ है। आसान शब्दों में कहें तो एक छोटी सी जगह में कितने सारे लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं। चलिए अब अपने पहले सबसे जरूरी कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो है जल का जादू। अब आप जैसे होशियार अन्वेषक ये तो जानते ही होंगे कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पीने के लिए, खेती करने के लिए और अपने घर बनाने के लिए साफ और ताज़ा पानी सबसे जरूरी चीज है। इसके बिना कोई भी गांव या शहर कैसे बच सकता है ना? और पानी की इसी जादुई ताकत की वजह से दुनिया भर की नदी घाटियों में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लोग वहां रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूखे रेगिस्तानों में पानी नहीं होता, इसलिए वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। हमारे स्काउटिंग मिशन का दूसरा पड़ाव है बस्तियों के लिए बेहतरीन मिट्टी। आपको पता है, अच्छी और उपजाऊ मिट्टी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। ये लोगों को अपनी तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि इसी मिट्टी में किसान वो ढेर सारा अनाज उगा सकते हैं, जिससे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोगों का पेट भरता है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, चीन में हुआंगी और चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के किनारे, ये सब दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं। इससे साफ पता चलता है कि बेहतरीन मिट्टी हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब आते हैं हमारे तीसरे कारण पर, जो जमीन के बहुत नीचे छुपा है, खनिजों का आकर्षण। जब भी जमीन के नीचे कोई कीमती खजाना यानी खनिज मिलता है तो क्या होता है? हजारों लाखों लोग वहां काम की तलाश में और नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए दौड़े चले आते हैं। ये उनके लिए कमाई का एक बहुत बड़ा मौका होता है। इसके दो बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। पहला, दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खदानें और दूसरा, मध्य पूर्व के देशों में मिला तेल। जैसे ही इन खजानों का पता चला, वहां रातों रात बड़ी बड़ी बस्तियां बस गई और लाखों लोग वहां पहुंच गए। चलिए अब समय हो गया है एक छोटे से और मजेदार पॉप क्विज का। देखते हैं हमारे जासूसों ने अब तक क्या क्या सीखा है। तो आपका पहला सवाल है, सही या गलत? क्या इंसानों को सहारा रेगिस्तान जैसी भयंकर गर्मी या अंटार्कटिका जैसी कड़ाके की ठंड वाली जगहों पर अपना घर बनाना पसंद है? सोचिए सोचिए। और इसका सही जवाब है बिल्कुल गलत। इंसान हमेशा ऐसे चरम मौसम से बचते हैं, क्योंकि ऐसी जमा देने वाली ठंड या झुलसा देने वाली गर्मी में घर बनाना और खेती करना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। अब तैयार हो जाइए हमारी दूसरी चुनौती के लिए। हमारे इस मिशन के हिसाब से नदी घाटियों में हमेशा इतनी ज्यादा भीड़ क्यों होती है? बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि वहां पीने और काम करने के लिए ताज़ा पानी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और जैसा कि हमने जाना, ताज़े पानी के बिना तो कोई बस्ती बस ही नहीं सकती। और अब हमारे क्विज का आखिरी सवाल, क्या आप किसी एक ऐसे उपजाऊ मैदान का नाम बता सकते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है? जरा याद कीजिए उन सुपर मिट्टी वाली जगहों को।
अगर आपने गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुआंगी, चांगजियांग या नील नदी में से किसी का भी नाम लिया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये सभी वो शानदार जगह हैं जो लाखों लोगों का पेट भरने के लिए एकदम बेहतरीन जमीन देती हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 5, अंतिम संसाधन। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये खजाना तभी काम आता है जब स्वस्थ, पढ़े लिखे और प्रेरित लोग इसका सही इस्तेमाल करना जानते हों। इसलिए अपनी खूबियों और क्षमताओं के कारण इस पृथ्वी पर सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संसाधन खुद हम इंसान ही हैं। अब जबकि हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप दुनिया के नक्शे को एक बार फिर से देखें और सोचें, अगर आपको पृथ्वी पर कहीं भी एक बिल्कुल नया और परफेक्ट शहर बसाने का मौका मिले, तो आप कौन सी भौगोलिक खूबियों वाली जगह चुनेंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तब तक के लिए अपना अन्वेषण जारी रखिए। Hey everyone, and welcome class to today's explainer. I am so excited for the lesson we have ahead of us. We are going to be taking a massive global field trip today, conceptually of course, to try and solve one of the most fascinating puzzles in all of human geography. And that puzzle is, why exactly do humans live where they do? We're going to dive into the geography, the math, and the economics of our very own species. 6.6 billion. That is the estimated number of people on this planet according to our source data. Just take a second and let that staggeringly massive number sink in. I mean, that is a lot of individuals. But why does a number this huge actually matter to us as geographers? Like, what makes this giant group of people so incredibly important to the planet? Well, it's because people aren't just, taking up space on Earth. They are actually a nation's absolute greatest resource. Think about it for a second. Nature's bounty, whether we're talking about rich soil, vast forests, or deep underground minerals, all of that only becomes significant when people figure out how to find it, extract it, and actually make it useful. It's people, armed with their demands and their abilities, that turn elements of nature into actual resources. So when you have healthy, educated, and motivated human beings, they literally become the ultimate resource. So here's our game plan for today's explainer. 1, the ultimate human resource. 2, where does everyone live? 3, understanding population density. 4, nature's population magnets. 5, social and economic magnets. And 6, decoding population patterns. All right, let's jump straight into section 1, the ultimate human resource. Here's the thing you have to understand. Human resources aren't just born ready to go. They are intentionally developed. We humans are the fundamental key to unlocking our planet's potential, but that potential isn't unlocked automatically. Take a look at the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, or the PKVY scheme, which kicked off back in 2015. The entire objective of this program was to train 1 crore, that's 10 million Indian youth, to really develop their aptitude for employable skills. By providing quality education and skills training, everyday people are totally transformed into highly valuable, capable human resources who can actively develop the world around them. Moving right along to section 2, where does everyone live? Okay, this is honestly one of the most staggering statistics in all of geography. The way people are spread across the Earth is, well, it's extremely uneven. In fact, get this, more than 90% of the entire world's population is squeezed onto just 30% of the land surface area, which means the remaining 70% of the Earth's land, it's virtually empty, just sparsely populated by very few people. And this contrast brilliantly illustrates that unevenness. On one hand, you have these incredibly crowded areas like South and Southeast Asia, Europe, and Northeastern North America. Actually, almost 3/4 of the world's people live in just 2 continents, Asia and Africa. Contrast that with the sparsely populated areas, the freezing high-latitude polar regions of Russia and Canada, high mountain ranges, and dense equatorial forests. It's night and day. Which brings us to the math part of our lesson in section 3. Understanding population density. So what is population density? It's simply the number of people living in a unit area of the Earth's surface, and we usually express this as persons per square kilometer. To give you a bit of a benchmark here, the average density of the whole world is 51 persons per square kilometer. But then you look at a country like India, and its average density sits all the way up at a whopping 382 persons per square kilometer. And overall, South Central Asia has the highest density in the entire world. If those numbers are a little hard to visualize, let's just imagine our own classroom. When all 30 of you are sitting right here at your desks, the room feels pretty crowded, right? The density is high. But if I take the exact same 30 students and put you all in the massive school assembly hall, suddenly it feels super open and empty. The number of people hasn't changed at all, but the size of the area has.
And honestly, that is the secret to understanding population density. Let's look at why this happens in Section 4, Nature's Population Magnets. See, nature has 4 main magnets that constantly draw human settlement. First up is topography. People just prefer living on flat plains rather than steep mountains, because plains are way more suitable for farming, manufacturing, and building roads and infrastructure. Second is climate. We naturally avoid extreme climates that are blistering hot or freezing cold. Third is soil. Fertile soils provide the perfect land for agriculture, which of course feeds the population. And fourth is water. People absolutely need to live where fresh water is easily available, which is exactly why river valleys are always so densely populated. Let's look at a real-world example. The Ganga Plains are basically the ultimate density magnet. They offer incredibly fertile soil and abundant fresh river water, which is why they happen to be among the most densely populated areas in the entire world. But on the complete opposite end of the spectrum, we have a density repellent, the Sahara Desert. Its extreme heat, intensely dry climate, and lack of water actively push humans away, resulting in a very, very sparse population. Now let's shift gears from nature to Section 5, Social and Economic Magnets. It turns out human-made societal magnets are incredibly powerful too. Socially speaking, areas that offer better housing, solid infrastructure, education, and health facilities, like the city of Pune, for example, they rapidly become densely populated urban centers. Then we have natural resources driving economics. The discovery of rich mineral deposits like diamond mines in South Africa or the discovery of oil in the Middle East literally pull entire settlements right out of the sand. And finally, industrial economic zones like Osaka in Japan or Mumbai in India attract massive numbers of people for one simple reason. They provide employment opportunities. People are always going to go where the jobs are. Let's wrap it all together in Section 6, Decoding Population Patterns. As geographers, we know that just counting the sheer number of people in a place isn't enough to really understand it. We need to look at population composition, which is the actual structure of the population. This details the specific qualities of the people living there, their age, their sex, how literate they are, their general health condition, what occupations they hold, and their income levels. This loops all the way back to our very first point today. Understanding these characteristics helps us figure out the actual quality of a nation's human resources. Let me leave you with a bit of a puzzle. Take a look at Bangladesh and Japan. Both are very densely populated countries. They both have a very high number of people squeezed into every square kilometer. But does a crowded country automatically mean it's economically developed? No, definitely not. Japan is far more economically developed, and that's because the quality of the human resource, factors like health, education, and technological skills, matters just as much as the sheer quantity. The composition of the population is the true secret to unlocking economic development. So as you look around your own city today, I want you to ask yourself, is your region growing purely in quantity, or is it actually developing its quality? Think about that, and keep exploring the incredible world around you. Thanks for joining me, class. I'll catch you next time.